Students, today in our session, we will see the construction of type 1 that I have told you, when four sides and one diagonal of quadrilateral is given to you. Okay, when four sides and one diagonal of quadrilateral is given. So let us start the construction part. Suppose four sides and one quadrilateral is there. How to construct? We will see by the example 1, that is exercise 4.1. We will see the first question. Okay, so exercise 4.1, question number 1 is construct the following quadrilaterals, out of which I have taken question number 1. Okay, we have 4 questions here and all are of the same type, which I have told you. 4 sides will be given and one diagonal will be given. First of all, here construction is there, so whatever part is there we have to construct by pencil only. Okay, since I am presenting to you this question by video format, so that is why I am using the sketch pens over here. Okay, so first of all, whenever you will start the construction, on your right hand side you separate this much column, okay, and write it here rough part. First we have to plot the rough diagram. Okay, so what is given? The name of the quadrilateral is ABCD. So roughly I am drawing a quadrilateral. Okay, quadrilateral is four-sided figure. The naming is ABCD. So whether I will take clockwise, okay, या एंटी क्लॉकवाइज ले लो, या एंटी क्लॉकवाइज बना लो, या तो क्लॉकवाइज भी, आप कैसे भी नेमिंग दे सकते हो. सो स्टार्टिंग विथ ए, देन बी, देन सी एंड डी. ओके, क्वाड्रिलेटरल के अकॉर्डिंग आई हैव गिवन द नेम. ओके, एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज. सो यू कैन गिव एनी लाइक क्लॉकवाइज ऑल्सो, बट you from wherever you will start. Okay, so you have to move either clockwise or anti clockwise. Okay, so here I am starting. सो ए बी सी डी. ओके, रफ पार्ट, रफ फिगर आपने बना लिया. अब उसके अकॉर्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन दी है, प्लेस द इंफॉर्मेशन ओवर देयर. ओके, फॉर एग्जांपल सपोज ए बी इज़ 4.5 सेंटीमीटर, सो ए बी इज़ 4.5. सी ए बी 4.5. ओके, बी सी इज़ 5.5, सो बी सी इज़ 5.5 सेंटीमीटर. ओके, सी डी इज़ 4 सेंटीमीटर, सी टू डी इज़ 4 सेंटीमीटर, AD इज 6 सेंटीमीटर. तो 4 साइड्स आर गिवन. यहाँ तक हमने सब लेवल कर लिया. एंड AC इज गिवन एज 7 सेंटीमीटर. AC, तो देखो A टू C, AC इज 7 सेंटीमीटर. ओके, सो फर्स्ट जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसके बेसिस पे यू प्लॉट दिस कंस्ट्रक्ट अ रफ डायग्राम ओवर हियर. रफ डायग्राम हो गया. अब क्या करना है, देखो वंस रफ डायग्राम इज कंप्लीटेड, सो एक एक मैं आपको यहाँ पे स्टेप्स भी लिखते जाऊँगा और उसके अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन पार्ट भी दिखा दूंगा. ओके, सो डाउन साइड इन योर पेज यू विल राइट स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, एंड इतने एरिया में हमारा जो होगा कंस्ट्रक्शन पार्ट होगा. ओके, कंस्ट्रक्शन विल बी इन दिस पार्ट. सो वन बाय वन आई विल कंस्ट्रक्ट एंड अकॉर्डिंगली आई विल राइट द स्टेप्स ऑल्सो. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल I am looking at the rough part, so I am drawing this AB equal to 4.5 centimeter. So I have a scale here. Okay, so from this point 4.5 centimeter line I am drawing. Okay, and naming it as AB. ये वाला पार्ट हो गया. AB बना लिया हमने 4.5 सेंटीमीटर का. ओके, this one done. So what I have done, the same thing I will write in the steps also. Steps of construction: draw AB equal to 4.5 centimeter. Clear? The next one, draw an arc taking 5.5 centimeter from point B. Right? देखो point B से ये वाला लाइन हम बनाएंगे. सो इस लाइन के लिए हमें क्या करना होगा, देखो ये एक ट्राइंगल है. ओके, ये ट्राइंगल हम पहले बनाएंगे.
सो इस ट्राइंगल के लिए हमें क्या करना है, देखो 4.5 का हमने ये खींचा हुआ है बी. सो फ्रॉम ए आई विल कट एन आर्क ऑफ 7 सेंटीमीटर एंड फ्रॉम बी आई विल कट एन आर्क ऑफ 5.5 सेंटीमीटर. ओके, एंड दैट पॉइंट विल बी सी. क्लियर. सो बी से हम 5.5 सेंटीमीटर का आर्क कट करेंगे. फॉर दैट यू हैव टू यूज़ द कंपास, ओके, एंड स्केल. सो 5.5 centimeter arc I have to take. So this is of measurement 5.5 centimeter. Okay, so from B I have to cut an arc of 5.5 centimeter. तो ये एक आर्क बना दिया मैंने 5.5 सेंटीमीटर का. सो फ्रॉम B इट इज़ 5.5, फ्रॉम A इट इज़ 7. तो हमें क्या मिल जाएगा, पॉइंट C मिल जाएगा. ओके, सो फ्रॉम A वी हैव टू प्लॉट कट एन आर्क ऑफ 7 सेंटीमीटर. This is of 7 centimeter from A. Okay, so from A I'm cutting an arc of 7 centimeter. Okay, so ये B वाला आर्क उससे इंटरसेक्ट नहीं हुआ है, so I am taking 5.5, little bit smaller one. Okay, so from B R. Okay, so this is the point of intersection and the point of intersection of this arc will be C. Okay, so from B I have taken 5.5 centimeter and from A I have taken 7 centimeter. So steps I am writing. Draw an arc taking radius 5.5 centimeter from B. Okay, and third step is taking radius 7 centimeter, draw another arc from point A which intersect the previously drawn arc. Okay, पहले हमने B से 5.5 का आर्क खींचा, then from A of 7 centimeter arc. Okay, so these two arcs intersect at C. Okay, so I am writing here, name the point of intersection as C. ये जो point of intersection है उसको हमने C नेम दे दिया. Now we will join B to C and A to C, BC and AC. Okay, so ये join कर देते हैं. We have to join from B to C point. Okay, and from A to C point. Okay, so this much part is done. AB is 4.5, BC is 5.5, AC is 7. Okay, 7 centimeter. Now similarly we will choose point A and C, and A से 6 सेंटीमीटर का आर्क and C से 4 सेंटीमीटर का आर्क, and that point will be D. Okay, from A we will cut an arc of 6 centimeter. Okay, so 6 centimeter arc we will choose on scale. Okay, using compass, so keeping it on 0 point. So this is of 6 centimeter. From A we have to construct an arc of 6 centimeter. Okay, so here I have cut. Okay, so from C we have to cut an arc of 4 centimeter that will intersect at this point, and that point will be D. Okay, an arc of 4 centimeter. From C we have to cut an arc of 4 centimeter. So this point is D point. Okay, so steps also I am writing. Fourth step, draw an arc of radius
6 centimeter from A and 4 centimeter from C, okay, which in short I'm writing which intersect at point D. So this is the point D, okay. Fifth point, join AD and CD. Join AD and CD. So we will join this. Join AD and CD, okay. So AD is of 6 centimeter and CD is of 4 centimeter. So at last we will write ABCD is required quadrilateral. Clear? So in this way you have to construct the quadrilaterals, okay. These are the one type of construction where 4 sides and 1 diagonal will be given. Rough part should be there, okay. Rough part में जो भी information दिया उसको पहले present कर लोगे, okay. Rough part and जो construction part है that will be drawn with pencil only, okay. ये दोनों part आप pencil से ही करोगे. The reason why I am using sketch pen is that is to be visible in the video part, okay. And steps you have to write in the below part. Is that clear? So this completes question number 1.